future nurses. Hope you're all doing well. My name is Manjot from Pro RN coaching classes. Together we can conquer this. Today we are going to talk about a very important topic. And the name of this topic is RH incompatibility. Before we talk about RH incompatibility, I wanted to make sure that you all know about the blood groups in human body. So अभी जब हम ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं तो हमारी बॉडी जो हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं हमें 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं. पहला A, B, O या फिर AB. Now when we talk about these blood groups, it could be A positive or A negative, B positive or B negative. Now what makes it positive or negative? It is the RH factor. So this is the RH factor which makes these blood groups positive or negative. अभी ये RH factor होता क्या है? It's also known as rhesus factor. ये एक प्रोटीन होता है. हमारी बॉडी में ब्लड क्या होता है? ब्लड में क्या क्या होता है? RBCs होते हैं, WBCs होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं. जब हम RBCs की बात करते हैं, जब RBCs के ऊपर प्रोटीन जो होता है उसको बोलते हैं RH फैक्टर, rhesus फैक्टर. जो नेगेटिव होते हैं जैसे A नेगेटिव, O नेगेटिव, उनकी बॉडी में ये प्रोटीन नहीं होता. Now let's come to the topic. What is RH incompatibility? RH incompatibility होता है when someone with RH negative blood group conceives or becomes pregnant with the baby who is positive. It matters. So अगर आपका blood group being a woman, जैसे मैं अपनी example दूँ, when I was pregnant with my baby, तो मेरा blood group जो था वो O negative था और मेरा baby उसका blood group था O positive. So I was in a condition called RH incompatibility. So it's clear now. RH incompatibility होता है when someone with RH negative factor, who is RH negative, who does not have that protein on the RBCs, becomes pregnant with the baby who has that protein on their RBCs. So that's incompatibility. Let's talk about the causes of RH incompatibility now. कौन-कौन सी चीजों की वजह से ये कंडीशन जो हो सकती है. So when a woman is pregnant for the first time, जब कोई भी औरत when she is pregnant for the first time and she is RH negative and her baby is RH positive, and because baby and mother's blood does not come in contact until or unless there are few things done. अभी हम जो मैं बता रही हूँ वो ये है कि जैसे कि जब तक जैसे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एमनियोसेंटेसिस जो कि प्रीनेटल प्रोसीजर्स होते हैं बेबीज में जेनेटिक कंडीशंस को डायग्नोस करने के लिए. इनमें क्या करना पड़ता है? इन्वेसिव प्रोसीजर्स है एंड देयर आर चांसेस कि बेबी का ब्लड ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर मॉम के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए. तो क्या होगा when the blood which is RH incompatible comes in contact? तो as a RH negative person मेरी बॉडी के लिए वो RH positive जो ब्लड होगा मेरे बच्चे का, it's gonna be a foreign body. मेरी बॉडी उसको पहचानेगी नहीं. It's my immune system will try to fight that foreign body in my blood by creating एंटीबॉडीज. तो मेरी बॉडी क्या करेगी? जब मेरे बेबी का जो ब्लड है वो पॉजिटिव है, मेरे ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, देन माय बॉडी विल क्रिएट एंटीबॉडीज टू फाइट दैट न्यू थिंग. उससे क्या होगा? वी विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी गेट टू द कॉम्प्लिकेशंस. और क्या क्या आ सकता है कॉजेस में? ड्यू टू व्हेन देयर इज द लेबर के टाइम में, जब बेबी की डिलीवरी होने का टाइम है, सिजेरियन सेक्शन, एब्डोमेन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई ट्रॉमा या फिर एक्सीडेंट की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो तो उसकी वजह से,
जैसे हमने एमनियोसेंटेसिस की बात की, वैसे ही कोरियोनिक वेलस सैंपलिंग होता है, वो भी एक प्रीनेटल टेस्ट है, इन्वेसिव है, उसकी वजह से हो सकता है। सो इससे एक चीज तो बहुत क्लियर है, RH इनकम्पेटेबिलिटी जो है वो फर्स्ट प्रेगनेंसी को इतना अफेक्ट नहीं करती जितना वो नेक्स्ट प्रेगनेंसीज को कर सकती है। Why? Because as we have already talked, mom and mother and baby's blood are not in contact during the pregnancy. So बहुत rare chances हैं in case there's an accident or a miscarriage or a sampling, invasive sampling done, और जिसकी वजह से internal bleeding हुई और contact में आया। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो until delivery, जब baby deliver होता है, baby और mom का blood contact में नहीं आता। So what happens in second pregnancy? When I delivered my baby, my first baby, now what happened? My body was in contact. During the delivery, my body came in contact of my baby's blood, and then what happened? My body created antibodies against RH positive blood group. And when my second pregnancy, if my baby is positive again, so it will hurt my baby because my body is going to identify the blood type and automatically start attacking my second baby. So RH incompatibility first pregnancy को इतना affect नहीं करती जितना next, second और third pregnancy को कर सकती है। और उसके रिस्क क्या हो सकते हैं? Just imagine फर्स्ट प्रेगनेंसी में इट वॉज अनडायग्नोज्ड या समहाउ ये मिस हो गया, या फिर ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो गई कि मेरा और मेरे बच्चे का ब्लड कांटेक्ट में आ गया। तो इसका रिस्क क्या हो सकता है? तो पहली चीज, फर्स्ट थिंग इज इट डज नॉट अफेक्ट द मदर, इट अफेक्ट्स द बॉडी बिकॉज इट्स मदर्स body which is creating those antibodies to protect the mother from that foreign antigens from the baby's blood group. तो mother की body जब antibodies करेगी create, it will attack RBCs of the fetus. उससे क्या होगा? हीमोलाइसिस होगी, फीटस में एनीमिया हो जाएगा। सो ये सारी चीजें एनीमिया की वजह से, स्पेशली जो बच्चे जिनमें ये कंडीशंस होती है वो जॉन्डिस्ड होते हैं, और भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं सीवियर केसेस में। इफ इट इज अ माइल्ड केस इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, इट इज प्रिवेंटेबल। प्रिवेंशन की बात करें, प्रिवेंशन तब आती है when we control it before it happens. So when I was pregnant, my doctor made sure that there is no injury or no antibodies in my blood. So first thing about this situation, to prevent this, what we can do? First thing is diagnosis, check the blood group of the mother to make sure she is not O negative or RH negative. Second thing, there is a vaccination which is called Rhogam. It is given on 28 weeks and within 72 hours of the delivery if your baby is positive, RH positive. In 28 weeks पहली वैक्सीन लगती है, और 72 hours after the delivery, within the delivery time दूसरी वैक्सीन लगती है। और दूसरी वैक्सीन जो होती है वो सिर्फ तभी दी जाती है if the baby is RH positive. So prevention is the best thing in this situation, क्योंकि जो ये रोगम की वैक्सीन है, very carefully listen it very carefully, it's very important. जो रोगम वैक्सीनेशन है, it only works, it only helps to prevent the formation of those antibodies. If there are any antibodies in my body already, it's not going to help. If you get a question in the exam, in a situation when mother's blood or mother's body has already created antibodies for baby, and it is asking you, does the Rhogam injection help? It does not help. It's not going to do anything if your body has already created those antibodies. It's just to prevent your body from creating those antibodies.
So that's very important, as we were already talking about the complications. So if it happens, if the antibodies are created, it causes anemia, hemolysis, it causes jaundice, severe cases can cause liver failure, cardiac failure. Now let's come to the management. How is it managed? So if there is a situation, if this Rh incompatibility situation happens in the pregnancy, so your doctor is going to keep a good eye on you to make sure that this is not getting severe or not affecting your baby. There may be a need to deliver the baby before the due time, but not in every case. Some pregnancy, it is like very mild and the delivery is on the right time. But if needed, doctors may deliver the baby before the delivery time, and also doctors will keep an eye on any signs of anemia or hemolysis in the baby. And after the baby is born, the symptomatic treatment is done, jaundice is treated, if needed blood transfusion is done, and also it is made sure the mother is also taken care of. अभी जल्दी से समराइज करते हैं जो भी अभी हमने पढ़ा है. हमने पढ़ा है RH incompatibility. What is RH incompatibility? When mother is RH negative and she gets pregnant with baby who is RH positive. Causes क्या हो सकते हैं RH incompatibility के? कोई भी diagnostic invasive procedure जैसे amniocentesis, chorionic villus sampling या फिर miscarriage हो सकता है. कोई भी ऐसी situation जहाँ पे मदर और बेबी का ब्लड कांटेक्ट में आता है, क्योंकि तभी मदर की बॉडी एंटीबॉडीज अगेंस्ट बेबीज बॉडी बनाती है. तो उसके बाद प्रिवेंशन क्या है, इसकी डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस है सैम्पलिंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ मदर. इफ शी इज नेगेटिव, देयर आर 2 vaccines, one at 28 weeks of pregnancy and second one only if baby is positive, RH positive is given within 72 hours of the delivery, so that second pregnancy does not get complicated. And that's the prevention of this Rhogam injection. Name of the injection is Rhogam. Most important point, once again, it does not destroy the antibodies, it only prevents the antibodies. So it is preventive treatment. Complications, अगर ये सब सीवियर कंडीशन में चला जाए तो इससे क्या नुकसान होता है? नुकसान सिर्फ बच्चे का होता है. इसमें क्या होता है? एनीमिया, हीमोलाइसिस, जॉन्डिस, लीवर फेलियर, कार्डियक फेलियर, ये सब होने के चांसेस होते हैं इन सीवियर केसेस, और उससे स्टिल बर्थ भी हो सकता है. अभी इस सब से कैसे बचा जा सकता है? वही जैसे अभी हमने बात की है, रोगम वैक्सीनेशन, प्रॉपर स्क्रीनिंग ऑफ मदर एंड कीपिंग एन आई ऑन RH नेगेटिव मदर. And if you have not subscribed ProRN, please do it so we could bring up more videos like this and talk about all the important topics for your nursing exam. See you again.